Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss about the post-fertilization. Post-fertilization means the event that happens after the fertilizations. So what is fertilization? Post-fertilization is a series of events that takes place after fertilization to develop a seed, form an ovule and a fruit, form an ovary. That's mean fertilizations के बाद ओव्यूल से जो सीड डेवलप होता है एंड ओवरी से जो फ्रूट डेवलप होता है उसी प्रोसेस को पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं. द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रायोजेनी. सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. व्हाट इज एंडोस्पर्म? वी नो दैट during the fertilizations, two male gametes are releases through the pollen tube, and out of two male gametes, one fuses the egg and forms zygote, and other male gametes fuses the two polar nuclei and produce a triploid cell known as endosperm. So, endosperm is a endosperm is a type of tissue which is present in the seeds of flowering plants during the time of fertilization. That's mean fertilization के समय बीजों में endosperm present रहता है. Reserve food materials fill in the cells of endosperm tissue. That's mean food materials endoplasm में reserve रहते हैं. It provides nutrition to the developing embryo in the form of starch. That means जब एम्ब्रायो डेवलप करते हैं तब एंडोप्लाज्म एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. दीज आर एज फॉलोज. दैट मीन्स एंडोस्पर्म 3 टाइप में डेवलप करते हैं. वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. सो व्हाट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन? In this process, the primary nucleus of endosperm undergoes a nuclear division to produce free nuclei without wall formation. That means जब न्यूक्लियर डिवीजन एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान डिवीजन होके जो एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करते हैं उसी को न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बोलते हैं. Then cellular endosperm formation. During nuclear division, the formation of cell wall occurs and it leads to the cellular endosperm formation. That means nuclear division के समय जो cell wall form होता है वो cell wall develop करके cellular endosperm form करते हैं. And the next step is helobial endosperm formation. What is helobial endosperm? It is an intermediate type of endosperm formation between cellular and nuclear type endosperm formation. That means nuclear endosperm and cellular endosperm का बीच में जो endosperm produce होता है उसी को helobial endosperm formation कहते हैं. So during seed maturation or in the mature seed, the developing embryo may either utilize the endosperm completely or it is used by seed during seed germination. That means जब एक सीड मैच्योर होता है तब डेवलपिंग एम्ब्रायो आइदर टोटली यूजेस द एंडोस्पर्म, अदरवाइज इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सीड ड्यूरिंग इट्स जर्मिनेशन. नाउ द एम्ब्रायोजेनी. एम्ब्रायोजेनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो. मीन्स एम्ब्रायो कैसे डेवलप करते हैं. डेवलपिंग प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायो को एम्ब्रायोजेनी कहते हैं. एम्ब्रायोजेनी इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो फ्रॉम अ जाइगोट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स में एम्ब्रायो जाइगोट से एम्ब्रायो कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे डेवलप होता है उसी प्रोसेस को एम्ब्रायोजेनी कहते हैं. Embryo development stages are same in both monocot and dicot plants. That means monocots and dicots both plants में embryo development same process में होता है. In dicot plants, embryo and embryonal axis and 2 cotyledons are present. That means in case of dicot plants, the
एक एम्ब्रायोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है और 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होता है. व्हाट इज कोटिलेडन्स? Cotyledons is an embryonic leaf in seed bearing plants or first leaf appear from a germinating seeds. That means cotyledons means in a seeds first leaf of a seed is known as cotyledons. So in case of dicots there are 2 cotyledons present. 2 parts are present in the embryonal axis. These are epicotyle and hypocotyle. It is located above the cotyledon level. That means cotyledon के ऊपर cotyledons के above the cotyledons epicotyle is present and hypocotyle it is located below the cotyledon level. That means cotyledon के नीचे जो एक्सिस प्रेजेंट होता है उसी को hypocotyle कहते हैं. In a monocot plants, embryo consists of only 1 cotyledons. We see that in monocots, dicots में 2 cotyledon present होता है, लेकिन in monocots plants, there 1 cotyledon present होता है. The cotyledon is termed as scutellum in the grass family. That means cotyledon monocot plants में जो cotyledon present होता है उसी को scutellum कहते हैं. What is scutellum? Scutellum is a shield-like structure. Root cap of grass is covered with the undifferentiated sheet which is called as coleorhiza. That means root cap जो undifferentiated sheet से cover होता है उसी को coleorhiza कहते हैं. A portion of the embryonic axis which is located above the scutellum is called as epicotyles and consists of shoot apex and coleoptiles. That means scutellum का ऊपर जो embryonic axis present होता है known as epicotyles. वो shoot apex and coleoptiles को consist करते हैं. Here this is a dicot embryo. This part is plumule. Plumule means stem of an embryo. This is cotyledons. This is radicals and this is root cap. And here this is a longitudinal section of an embryo of grass. That means grass means monocot. Monocot seed का longitudinal section. Here this part is scutellum. This is coleoptile and this is shoot apex and epiblast means the outer cover and this portion is root cap and this is coleorhiza. Coleorhiza means undifferentiated sheet.